So in our last lecture, we have started studying about the operations, right? Operations on the matrices. And in that bit we have learned that out of the 4 operations, बच्चा लोग we can perform which operations? हम लोग matrices के ऊपर कौन से operations perform कर सकते हैं? Number 1 is a addition, number 2 is a subtraction, and number 3 is a multiplication. Correct? These are the operations that we can perform over the matrices. Out of which we have started with the first operation. बच्चा लोग which was that first operation? सबसे पहले जो हम लोग ने स्टार्ट किया था बेटा वो क्या था? इट वाज द एडिशन. तो भाई मुझे जरा बताओ कि क्या मैं यहाँ पे कोई भी 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकता हूँ? नो. तो फॉर एडिंग द 2 मैट्रिसेस, भाई व्हाट इज द क्राइटेरिया? What is the criteria? Both the matrices they should be of the same order. Meher, ये first point था बड़ा, first point कि both the matrices they should be of the same order. Last lecture में तू मुझे पूछ रहा था ना सर कि वो 3 points क्या क्या है, तो उसमें से first point ये था बड़ा, both the matrices they should be of the same order. Next, अच्छा, when the 2 matrices when they will be added, so in that case can we add any of the elements? मैं कोई भी एलिमेंट को मतलब किसी के साथ भी ऐड कर दूंगा तो चलेगा क्या? नो. ओनली विच एलिमेंट्स कैन बी एडेड? सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट्स बट हम लोग ऐड कर सकते हैं? करेक्ट, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ओनली दैट कैन बी एडेड. करस्पॉन्डिंग. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म करस्पॉन्डिंग? करस्पॉन्डिंग मीन्स एलिमेंट्स with the same position. Elements with the same position, only that elements they can be added. Acha. Third point, when you will find sum. So what will be the sum of the 2 matrices? The sum of the 2 matrices, whether it will be of the same order, it will be of different order. Correct, it will be of the same order. But chalo, very good. Chalo. After completing addition, now we are going to start with the second operation, which is being called to be as subtraction. Subtraction of the 2 matrices. So everybody study subtraction of the 2 matrices. So when we are going to start with this term subtraction,
subtraction between the two matrices. So here also the conditions, they are going to be the same. They are going to be the same. मैं लिखूंगा नहीं बड़ा, मैं सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा. तुम्हें अगर कहीं पे नोट करना है तो कहीं पे लिखते रहना फटाफट फटाफट. For carrying out the subtraction between the two matrices, for carrying out the subtraction between the two matrices, it is always compulsory. It is always compulsory कि both the matrices, they should be of the same order. Both the matrices, they should be of the same order. Next, when the two matrices, when they are being subtracted, when the two matrices, when they are being subtracted, only the corresponding elements, I repeat, only the corresponding elements, they can be subtracted. अच्छा बच्चा लोग, when I am saying that only the corresponding elements, they can be subtracted, that means the elements with the same positions, elements with the same positions, only they can be subtracted. Only they can be subtracted. And next, at number 3, when you will find the difference, when you will find the difference, so in that case, the order of the difference will always remain the same. The order of the difference, it will always remain a same. समझा? तो ये तो भाई पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम टू सेम एडिशन के हुए कि नहीं बच्चा लोग, मुझे बताओ फटाफट. सेम टू सेम, जैसा मैंने एडिशन में बताया था, सेम टू सेम ऐसा ही सब्ट्रैक्शन में हुआ कि नहीं बच्चा लोग. तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल. A is a matrix. A is a matrix whose elements are 8, 7, 6, 5, 4, 3. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Next, B is a matrix. B is a matrix. Five, 4, 3, 2, 1, 0. चलो सब लोग रेडी हो. एंड नाउ यू स्टार्ट विद द आंसर्स फटाफट. बच्चा लोग मुझे बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A is? When I am talking about A is a matrix which is of the order. Three by two. B is a matrix which is of the order. Three by two. Both the matrices, are they of the same order? Both the matrices, are they of the same order? Yes, they are of the same order. And since they are of the same order, बच्चा लोग मुझे जरा बताओ whether the subtraction between the two matrices, बच्चा लोग, whether it is possible. Yes. When you will start with the subtraction, in that case, you will get your answer to be as A minus B, which is equal to
8, 7, 6, 5, 4, 3. Minus it is 5, 4, 3, 2, 1, 0. चलो बेटा, only the corresponding elements will be subtracted. That means elements with respect to their same positions. बच्चा लोग only they will be subtracted, right? अच्छा, तो भाई मुझे बताओ, when you will be carrying out the subtraction, तो सबसे पहले important step is you show that the corresponding elements are getting subtracted. 5 will be subtracted from 8, 4 will be subtracted from 7, 6 it will minus 3, 5 minus 2, 4 minus 1, 4 minus 1, and after that there will be 3 minus 0. बरोबर? तो चेक करके मुझे बताओ भाई. Therefore, when you will find the difference a minus b it will be equal to start 8 minus 5, 3, 7 minus 4, 3, 6 minus 3, 3, 5 minus 2, 3, 4 minus 1, 3, 3 minus 0, 3. चेक करो ना यहाँ पे, ये जो डिफरेंस हमें मिला बड़ा, डिफरेंस वो सेम मिला बड़ा, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. वो तो सब ठीक है, बट ऑर्डर चेक करो बड़ा. ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर इज 3/2. बराबर. ये देख ले बड़ा अमित, सब्ट्रैक्शन देख ले बड़ा, सब्ट्रैक्शन बिटवीन द टू मैट्रिसेस लेट आया क्या क्लास में? अमित भाई, चलो देख लिया बड़ा सब लोगों ने. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी।
चलो आफ्टर कंप्लीटिंग बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब जो तुम लोग को बड़ा मैं सिखाने वाला हूँ सब लोग उसके ऊपर ध्यान दो। नोट, चलो भाई नोट, चलो रेडी हो, चलो तो व्हेन यू विल स्टार्ट बड़ा विद द फर्स्ट पॉइंट, बड़ा पॉइंट नंबर 1, if A and B are the two matrices बराबर, which are of the same order such that A plus B it is equal to C, A plus B is equal to C। तो अब ये देखो यहाँ पे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पॉसिबिलिटी इसके ऊपर ध्यान दो। सपोज बट इफ यू आर बीन नोन विद A एंड इफ यू आर बीन नोन विद B, तो बाय एडिंग A एंड B तुम लोग को बड़ा C मिल जाएगा। फटाफट मुझे रिप्लाई करो यस और नो। करेक्ट, बराबर। अच्छा आगे देखो नेक्स्ट, सपोज बड़ा इफ यू आर बीन नोन विद ए एंड इफ यू आर बीन नोन विद सी, तो आराम से बोल तुम लोग को बड़ा बी मिल सकता है। अच्छा कैसे मिलेगा कोई मुझे बताएगा जरा, व्हाट विल बी बी इज इक्वल टू? मैट्रिक्स बी बड़ा इट विल बी इक्वल टू सी माइनस ए, बराबर है। चल नेक्स्ट, सपोज इफ यू आर बीन नोन बड़ा विद द मैट्रिक्स बी एंड इफ यू आर बीन नोन विद द मैट्रिक्स सी, तो भाई तुम लोग को बोल उसमें से ए मिल सकता है। अच्छा कैसे मिलेगा बड़ा ए, मुझे बताओ हाउ यू विल गेट ए, ए विल बी इक्वल टू बी माइनस सी, जो बोला बेटा अमित, बच्चा रॉन्ग है आंसर, प्लस बी व्हेन इट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो बेटा वो बी माइनस सी होगा या सी माइनस बी? सी माइनस बी होगा, बराबर है। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस सी if it is equal to I where I stands for identity matrix, बराबर है, where A, B, C and I they are of the same order। बच्चा लोग if you are been known with the matrix A with the matrix B, I तो हम लोग को पहले से पता ही है मैडम, तो आराम से बोल C फाइंड हो सकता है। अच्छा भाई कोई कोई बताएगा मुझे C इज इक्वल टू क्या होगा? This will result as I minus A minus B। चलो नेक्स्ट, फटाफट फटाफट आप लोग यहाँ से मुझे आंसर बता दिया और कि सपोज इफ यू आर बीन नोन विद मैट्रिक्स ए, बराबर, एंड योर एम इज टू फाइंड बी प्लस सी, तो बी प्लस सी भी फाइंड हो सकता है। अच्छा बताओ हाउ यू विल फाइंड बी प्लस सी? आई माइनस ए, वेरी गुड। बच्चा लोग कंसेप्ट क्लियर हुआ?
अब ऐसा कोई भी सिचुएशन आया या ऐसा कोई भी सम आया तो तुम लोग कर सकता है। बराबर है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, which is called to be as which is called to be as scalar multiplication. स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे तुम लोग सोच रहे होगे कि सर अपने को मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू मैट्रिसेस पढ़ा रहे, राइट? ऐसा लगा बच्चा तुम लोग को कि वी आर गोइंग टू स्टडी द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू मैट्रिसेस? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज बेटा नो। अगर ऐसा लगा है तो इट इज रॉन्ग है बेटा। नो बेटा नो। मीत मीत भाई बेटा वी आर नॉट स्टडिंग द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू मैट्रिसेस। बराबर ध्यान से पढ़ो, मैंने हेडिंग क्या लिखा है? इट इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर स्केलर। अच्छा तो भाई व्हाट इज स्केलर बेटा? व्हाट इज स्केलर? तो स्केलर जो है ना बेटा, स्केलर इट इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। व्हाट इज स्केलर बेटा? इट इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। व्हेन any non-zero real number, when it is been multiplied with a matrix, so we call such type of multiplication to be as a scalar multiplication. स्केलर जो है बेटा, स्केलर वो कौन है मैडम? व्हाट इज अ स्केलर? चलो रिपीट करो, व्हाट इज स्केलर? स्केलर मींस बेटा इट इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर बेटा। स्केलर मींस बेटा इट इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर बराबर है कि नहीं? नॉन जीरो रियल नंबर when it is been multiplied with a matrix, we call such type of matrix to be as a, we call such type of matrix to be as a, or sorry we call such type of multiplication to be as a scalar multiplication। बराबर। अच्छा when I'm using the word non zero, बच्चा लोग कोई मुझे बताएगा नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो मीन्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? अच्छा तो वो नंबर पॉजिटिव हो सकता है? फटाफट मुझे रिप्लाई करो, वेदर इट कैन बी अ पॉजिटिव विदाउट जीरो, नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा क्या वो नेगेटिव हो सकता है बच्चा लोग? नेगेटिव हो सकता है। अच्छा क्या वो फ्रैक्शनल हो सकता है बेटा? फ्रैक्शनल हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता? जीरो। क्यों नहीं हो सकता है जीरो? वो मैं तुम्हें बाद में अभी एक्सप्लेन करूंगा कंसीडर द मैट्रिक्स ए which is equal to 2 4 6 8। बराबर। अब पहले केस में ना बेटा, केस वन में आई विल बी टेकिंग अ पॉजिटिव स्केलर, ठीक है मैडम?
case 1, I will be taking a positive scalar. अच्छा, positive scalar means suppose if I want to find the value of 3a. अब देखो 3a में मुझे फाइंड करना है वैल्यू 3a. बच्चा a जो है व्हाट इज a इज अ मैट्रिक्स, बट बड़ा मैट्रिक्स a को मुझे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 3 के साथ, बराबर है. तो इफ आई मल्टीप्लाई बड़ा नंबर 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, same number I will have to multiply on the right hand side, right? So this will become 3a is equal to a. It is a 3 times of a. 2, 4, 6. बराबर. अच्छा, तो अब तुम्हें क्या लगेगा कि ये जो 3 है बड़ा 3, क्या वो कोई पर्टिकुलर रो के साथ ही बड़ा मल्टीप्लाई होगा? फटाफट मुझे बताओ आंसर. क्या वो बेटा कोई पर्टिकुलर रो के साथ ही बड़ा मल्टीप्लाई होगा? नहीं. क्या वो कोई पर्टिकुलर कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा? नहीं. तो बेटा इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ all the elements, and when it will be multiplied beta with all the elements, यहाँ पे आंसर आ जाएगा. therefore 3a it will be equal to, you will get your answer. 3 2s 6 3 4s 12 3 6 18, बराबर है. 3 8 24. चेक करो ये आंसर आया बच्चा लोग. अच्छा बजा मुझे चेक करके बताओ मैडम. A is a matrix which was of order beta 2 by 2. तो जो 3a भी मुझे मिला बेटा 3a, it was of which order? 2 by 2, बराबर है. 2 by 2 का ही मिला बच्चा लोग. चलो छोकरा वो केवू लाइकू बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन तुमने लोगों ने. चलो नेक्स्ट केस 2. देख मैट्रिक्स तो बच्चा वही होगा, मैट्रिक्स विल रिमेन सेम, बट अब इस बार हम लोग स्केलर जो है वो नेगेटिव लेंगे बेटा, नेगेटिव.